Hello students, myself Manoj Pandey, PLPM Public School, Gola Bazar. Today we discuss the topic of statics, in which mean, to find the mean by the different method, direct method, assumed mean method and shortcut method. First we find the given question by the direct method. So therefore, number of plants and given class interval 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12 and 12 to 14, and their frequencies 1 to 1, 5, 6, 2, 3. So the class interval are given. The class interval are given and frequency of and mid value x and f into x. Now we apply on the given table as a direct method. Now we apply the direct method to find the mean of a given table, given class interval table. So 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 6 to 8 and 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14, 12 to 14, 12 to 14. Frequencies 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3, and the mean value of the class interval. Now we add the lower limit of the class interval and upper limit of the class interval divided by 2. इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ ऐड करने पे, उसके बाद 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारी किसकी होगी? x की होगी. मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ ऐड कर दिया जाए और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए. द सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट is equal to divided by x, 2 equal to x. मतलब आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13. The mid value x is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13. The difference between the class interval is 2 and the difference between the mid value is 2. Now we proceed. The next mid value is adding the 2 in preceding value. मतलब हम पहले वाली वैल्यू में अगर 2 2 2 ऐड कर दें तो हमें आगे वाली सक्सीडिंग वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर f into x, 1 into 1, 1, 2 into 3, 6, 1 into 5, 5, 5 into 7, 35, 6 into 9, 54, 2 into 11, 22 and 3 into 13.
39. Now we find the mean with the help of direct method. Sum of all the value of f into x. So find sigma fx. Sigma fx and sum of all values of the table of f into x. Therefore 9 to 11, 4, 15, 5, 20, 25, 31 plus 1, 32, 2, 3 carry, 3 3 is 6, plus 8, 13, plus 3, 16. And the sum of frequency is sigma f. 3 plus 1, 4, 4 plus 5, 9, plus 6, 15, 15 plus 5, 20. Therefore, the sum of the frequencies is 20 and the sum of product of f into x is 162. Now find the mean. Mean x bar equal to sigma fx upon sigma f. 162 upon 20. 8.1. 8.1 is the mean of given class interval table. 8.1 is the mean of given class interval table by the direct method. Now we apply the assumed mean method on this question. Assumed mean method. Next method is the assumed mean method. For the assumed mean method, so many table are increases. As we proceed the table, class, frequency, mean value x, mean value x, d equal to x minus a, d equal to x minus a, and f into d. Therefore 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, and 12 to 14. Frequency 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. And mean value 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Now we find assumed 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. देखो ये सारे नंबर्स हैं x में, किसी को भी एज्यूम कर लीजिए a, कैपिटल A,
जब एज्यूम करेंगे तो इसी मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। और कोशिश ये हो कि बीच वाले नंबर को एज्यूम कर लीजिए। ए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, दैट इज x minus a, 1 minus 7 minus 6, 3 minus 6, 3 minus 7 minus 4 minus 2, 0, 2, 4 and 6. Clear? And f into d minus 6 minus 8 minus 2 and 0, 6 into 2, 12, 2 into 4, 8 and 3 into 6, 18. Sigma FD, sigma FD and sigma F, sigma F equal to 20 and sigma FD देखो -6 -8 -2 टोटल -16 और 12, 8 and 18 ये सारे नंबर प्लस के हैं, ऊपर वाले नंबर माइनस के हैं। तो प्लस वाले नंबर हमारे पास कितने हैं? 20 + 10 30 + 8 38, 38 minus 16, 38 22, 38 minus 16, 22, 22. Now we find the mean with the formula. मीन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, 7 + 22 अपॉन 20, 7 + 1.1 that is 8.1. In both cases the result are same by the direct method as well as the assumed mean method. In both cases the value are same, answer are same. तो आप मीन के लिए डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़े लंबे होते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड में कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाते हैं, शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन थोड़े और छोटे हो जाते हैं। सो वी फाइंड द मीन with the help of direct method as well as assumed mean method. Now such given a plus sigma fd upon sigma f, this is the formula of assumed mean method. This is the formula of assumed mean method. Clear? Okay, thank you.